डियर स्टूडेंट तो आज आम डिस्कसन करवा इलेक्शन कमिशन जो अच्छी आमर 3rd नंबर चैप्टरटा तो यहाँ फास्ट यूनिट तो चलते डिस्कसन पूरा बहुत भल से डिस्कसन करवा पूरा फुल एक्सप्लेन सहित चलतु। तो देख कौन इलेक्शन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन आउ तार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देख द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द साइन क्यू नॉन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। माने आमर जो इलेक्शन माने रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द्वारा माने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जोटा कि साइन क्यू नॉन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलिकी आमे कहता हूँ। द framers of Indian Constitution were fully conscious of the essential condition and hence they provide for autonomous machinery, the election commission at the national level and vested in it the responsibility for the conduct of election to the parliament, state legislature and to the office of the president and vice president of India। माने हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने फुल्ली कॉन्शियस सहित माने इटा गोटे एसेंशियल कंडीशन बोल कि मेंशन कराई अब प्रोवाइड कराई माने गोटे स्वयं शासित मेसिनरी माने द इलेक्शन कमिशन माने से इलेक्शन कंडक्ट कर पारिबो नेशनल लेवल एंड वेस्टेड इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि ताकू कंडक्ट इलेक्शन माने पार्लियामेंट हाउ कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने आम टू द ऑफिसर्स किए प्रेसिडेंट आउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब देखो द इलेक्शन कमिशन इज एन ऑल इंडिया ऑटोनोमस बॉडी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड सेवरल स्टेप फॉर कीपिंग इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस। माने जो आम इलेक्शन कमिशन अच्छी पूरा भारत रो गोटे माने ऑटोनोमस बॉडी एवं माने इटा संविधान रो इनकॉर्पोरेटेड सेवरल स्टेप मध्य नहीं पारे कीपिंग इंडिपेंडेंट फॉर फ्रॉम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस। तापर तार आमे गठन देखिबा कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन देखो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमिशन consist of one chief election commissioner and other election commission if any as the president may for time to time determine article 324। माने आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर आमर संविधान आमको माने प्रोवाइड कर इलेक्शन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशन माने गोटे चीफ इलेक्शन कमिशन रहिबो आ अदर माने इलेक्शन कमिशनर माने रहिबे इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन माने इटा आमर आर्टिकल 324 रे मेंशन कराई जाइछि इलेक्शन कमिशन टा आउ टिल 1989 द इलेक्शन कमिशन यूज टू कंसिस्ट ऑफ ओनली द चीफ इलेक्शन कमिशन माने 1989 रु आमर कमिशन यूज माने कमिशन टा माने यूज करूछि चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट अपॉइंट एनी अदर कमिशनर आमर गवर्नमेंट माने अपॉइंट करि पारिबनी कमिशनर मारको एनी अदर कमिशनर मानको हाउएवर इन 1989 टू अदर कमिशनर वेर अपॉइंटेड along with the chief election commissioner माने 1989 रु दुईटा इलेक्शन कमिशन अपॉइंट कराई आउ माने ता सहित गोटे चीफ इलेक्शन कमिशनर लेटर ऑन आफ्टर इलेक्शन 9 नंबर लोकसभा रे आमर जो 1989 जनता दल गवर्नमेंट रेस्टोर द स्टाटस क्यू माने स्टाटस दिया गवर्नमेंट को क्यू रिलीविंग एडिशनल इलेक्शन कमिशनर माने से गोटे इलेक्शन कमिशन को ऐड करबो हाउएवर टू डिसीजन टू अपॉइंट टू एडिशनल कमिशनर माने दुईटा एडिशनल इलेक्शनर माने आमर कमिशनर रहिबे लेटर ऑन रिपीटेड प्रेजेंटली द इलेक्शन कमिशंस कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिशन एंड टू अदर इलेक्शन कमिशन माने गोटे चीफ इलेक्शन कमिशनर रहिबो जे कि मुख्य आ दुईटा माने अदर इलेक्शन कमिशनर रहिबे। जजमेंट देखो इन ए जजमेंट जुलाई 1995 delivered by the 5-member
constitutional bench, the Supreme Court held that election commissioner enjoy an equal status of chief election commission माने सेमान को भी माने गुटे इक्वल स्टेटस दिया जायछि चीफ इलेक्शन कमिशनर सहित। तापरे आमे पढ़िबा नेक्स्ट तापरे आमे पढ़िबा मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन। आमे केउ मेथड रे आमे चीफ इलेक्शन कमिशन एवं अदर जो इलेक्शन कमिशनर माने अछंती सेमान को अपॉइंट करि परिबा। तो देखो अपॉइंटमेंट दे परिबा। द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। माने ए जो सब्जेक्ट अछि एटा प्रेसिडेंट रो माने प्रेसिडेंट अंडर रे अछि हमर। देखो आकु पढ़िबा जे हमें दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर्स ऑफ द प्रेसिडेंट माने एइथिरो माने एई कार्य रे माने हमर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थांती। जनरली द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर आर अपॉइंटेड फॉर ए टीम ऑफ 6 years व्हिच बिगिंस फ्रॉम डेज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट्स। माने एथिरे कहै छी जनरली द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर कमिशनर अपॉइंट तांको टर्म्स 6 year पई व्हिच बिगिंस फ्रॉम डेट्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। दिस टर्म कैन बी एनहेंस बाय 1 year एट ए टाइम। माने सही टर्मटा माने एनहेंस बाय 1 year एट ए टाइम। हाउएवर नो पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 years कैन रिमेन ए मेंबर ऑफ द इलेक्शन। माने कैंसी भी पर्सन अटेन्ड ही परिबो 65 years तक कैन मेंबर ऑफ माने से इलेक्शन रो मेंबर ही परिबो इलेक्शन कमिशन रो। माने से तार फुल टर्म्स माने इयर्स होची 65 years। द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर 2 इलेक्शन कमिशन कैन क्विट ऑफिस बाय सबमिटिंग देयर रिजाइनेशन। हमर जो चीफ इलेक्शन कमिशन एवं अदर दुईटा जो हमर इलेक्शन कमिशनर्स अछंती से माने तांकर रिजाइनेशन कहा पाखे दे परबे प्रेसिडेंट को दे परिबे। एट एनी टाइम द माने कैंसी भी समय कौनसी भी समय रे प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव देम बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर फुल टर्म। आउ से माने जदि प्रेसिडेंट चाहिले भी तांको रिमूव करि पाबे तांकर पदवी रु माने तांकर जो फुल टर्मटा खत्म हेबा पूर्वरु मध्य। बट द प्रेसिडेंट कैन डू सो ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। किंतु प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रे खाली माने तांको माने बहिष्कार परिबे। आगु पढ़िबा जदि अदर वर्ड्स अलगा अदर मीन्स रे कहबा इन अदर वर्ड्स रे जदि कहबा इलेक्शन कमिशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन रेजुलेशन माने रेजुलेशन चार्जिंग विथ प्रूवन मिसबिहेवियर हो हला कि इनकैपेसिटी माने तार जदि कैपेसिटी हरे बसला पास ऑफ द ईच हाउस माने ईच हाउस माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने राज्य विधानसभा माने राज्यसभा आउ आमर लोकसभा ईच हाउस और पार्लियामेंट रो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ 2/3 मेजॉरिटी रे आमे मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग माने तांकर प्रेजेंट आउ वोटिंग द्वारा आमे तांको अलगे परिबा। द कॉन्स्टिट्यूशन दस प्रोवाइड्स डिफिकल्ट मेथड एटा माने गुटे डिफिकल्ट मेथड रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर्स को दिस हैज बीन डन फॉर एंश्योरिंग आउ एटा गुटे एंश्योर कथा जे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन फॉर एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तापरे नेक्स्ट अछि हमर पॉलिटिक्स ऑफ चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमिशन। देखो एटा टी कोडा ही परे 1989 रे मिस्टर राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड टू मोर इलेक्शन कमिश्नर। हाउएवर द डिसीजन एनुल्ड बाय मिस्टर वीपी सिंह गवर्नमेंट इन से समय रे माने राजीव गांधी दुईटा मोर इलेक्शन कमिशन अपॉइंट करथिले एनुल माने कहार डिसीजन रे मिस्टर वीपी सिंह गवर्नमेंट थिला समय रे नवंबर 1989 रे। आपने देखो इन अक्टोबर 1993 presidential ordinance was made and it sought to amend the chief election commission and other election commission। तापरे कंडीशन तांको सर्विस एक्ट 1991 रे माने गुटे साधारण माने गुटे चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन द्वारा जो आमर कंडीशन सर्विसटा पास हिता एक्ट 1991 and provided for multi-member election commission and laid down
the relationship between the Chief Election Commission and other election commissions. 1991 रे जो आमर एक तो सेटा प्रोवाइड कराइला मल्टी मेंबर इलेक्शन एंड लेट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन कहा सह आम रिलेशन रही चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन मान ऑन 1 अक्टोबर 1993 मेजर डेवलपमेंट माने मेजर डेवलपमेंट होता गोटे बड़ धरण विकास होता आमर 2 मोर इलेक्शन कमिशनर रे were appointed Mr. GVG Krishna Murthy, former member Secretary of Law Commission and Dr. M.S. Gill Agricultural Secretary, and this made the Election Commission 3-member body. माने एटा थिला हमर मेड द इलेक्शन कमिशन माने 3 member body इन थिला आणि थिला द ऑर्डिनेंस फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर माने यही ऑर्डिनेंस फर्दर प्रोवाइड करथिला चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर मे डिफरेंट टिके थिला ओपिनियन एनी मैटर रु सच मैटर सेल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी माने मेजॉरिटी हिसाब से मैंने डिसाइड कर ओपिनियन जो इलेक्शन कमिशन और चीफ इलेक्शन कमिशन जो 3-member बॉडी आनी थिला। तो देखो आपको कौन अच्छी further in respect of the business of the election commission the ordinance favor unanimity in the decision making by the multi-member election commission माने गुटे multi-member election commission माने बहुत संख्यक इलेक्शन कमिशन माने मेंबर माने थिले इलेक्शन कमिशन मेंबर माने थिले से माने डिसीजन नउथिले आउ it was officially explained माने इटा officially explain the status of the chief election commission and 2 new election commission was to be at part with the judges of the Supreme Court. Terms of pay and service conditions for the president they will have a 6-year tenure up to the age 65 years. In case जदि chief election commission आउ election commission रा 65 of age जदि before the expiry जदि सरीगला तापर 6 years terms he will have to vacate the office माने जदि 6 year term जदि सरीगला ताले तार सीटा पुणी vacate रहिबो कि जदि से रिजाइनेशन दे देला ताले तार सीटा vacant रहिबो तार term सरीबा पूर्वरु द गवर्नमेंट जस्टिफाई कोछि देखो चेंज इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंगल मेंबर इलेक्शन कमिशन टू ए मल्टी मेंबर इलेक्शन कमिशन ऑन ग्राउंड्स इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द कमिशंस by the ordinance and the presidential notification a mandate was given to the election commission to work multi-member body eta ute multi-member body transacts business as for the possible anonymously तापर देखो देन कौन अच्छी हमर एटा बेसी इंपोर्टेंट हुए तो सेति पई द देन चीफ इलेक्शन कमिशनर मिस्टर T.N. Sessions, however, held the view that governmental decisions. आमर जो चीफ इलेक्शन कमिशन थिले मिस्टर T.N. Sessions से माने गुटे व्यू दिजन गवर्नमेंटल डिसीजन वाज अटेम्प्ट टू लिमिट माने इटा लिमिटेड हिज फंक्शनिंग मिस्टर Sessions therefore थॉट तांको चिंताधारा कोन थिला फिट और फाइल रिट पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट आमर जो रिट पिटिशन हितला 27 अक्टोबर 1993 रे for asserting his supremacy and chief election commission and securing the independence of chief election by challenging the presidential ordinance 32 आमर रिट पिटिशन हितला आमर एटा 32 नंबर धारा रे अछि आ एटा प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस बोली कहै छै देखो चैलेंजिंग द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अब 1993 रे हितला he filed these petitions in his personal capacity and urged the court to declare the ordinance arbitrary, unconstitutional and void. He also prayed for a stay of the operation of ordinance as he contended that the presidential power is misused by issuing the ordinance and the notification for collateral purpose infringing
infringing on commission independence ମାନେ ଦେଖ କହିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେ କରୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ordinance is content that the presidential power ର ମିସୟୁଜ୍ ମାନେ ୟୁସିଂ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟୁ କୋଲେଟରାଲ୍ ପର୍ପୋଜ ଇନଫରିଂ କମିଶନଟା ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥାଏ ହି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ ଗିଭିଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମାନେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ପୁରା ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଉ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ in its judgment expected the view that chief election commission was to have the overall control over the election commission work माने आमर जो सुप्रीम कोर्ट रो जो जजमेंट थिला एक्सपेक्ट कला चीफ इलेक्शन कमिशन एंड द ओवरऑल कंट्रोल ओवर द इलेक्शन कमिशन माने इटा इलेक्शन कमिशन तार अंडर रे रहबो कंट्रोल ओवर द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द चीफ इलेक्शन कमिशन अलोन would be entitled to issue direction to the commission staff as well as outside agency effects also pass interim order upholding the supremacy of chief election commission to newly appointed election commissioners. The two election commission however prefer to process or leave later on the supreme court in its judgment तापर 1995 rule that the election commission enjoy co-equal 1995 ରୁ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଦେର୍ ଆଫ୍ଟର ଟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ୱାର୍କ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଇୟର୍ନେଷ୍ଟ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଏ 3 ମେମ୍ବର୍ସ କମିଶନ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଥିବ ଆଇ ଏନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଇଟା it has earned recognition as an efficient strong and independent institution which has ensured the working of election system as a free fair efficient system माने इटा free fair efficient system टा of election of the representative people of India माने से मन निजर रिप्रेजेंटेटिव निजे चूज करि परबे लोक मन भारत रो लोक माने इलेक्शन कमिशन हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग इलेक्शन लेस नोइजी एंड मोर ऑर्डरली तापर अछि देखो नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिशन किपरि कार्य करे आमर इलेक्शन कमिशन टा आर्टिकल 324 दिछि और 328 दिछि एटा टिके मिस्टेक होइछि बोले लागछि मते जहा लागुछि 329 आर्टिकल पर्यंत अछि आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल टा मेंशन अछि तो तमे भी देखि दबो गूगल साइज मार दबो फर्स्ट पॉइंट देखो प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द लोकल बॉडी माने हमर जो इलेक्टोरल रूल्स ऑफ द इलेक्शन पार्लियामेंट टा अछि सेटा इंक्लूड अछि लोकल बॉडी सह एटा आल्सो रिवाइज देम इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इनेक्टेड एंड पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर माने लॉ इनेक्टेड करे हमर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर superintendence direction and control of all matters pertaining to election of the माने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर हमर इलेक्शन रे माने ऑल मैटर्स रे क्यों माने माने जुड़ी की थांती आ कंट्रोल करंती डायरेक्शन दियंती सुपरिटेंडेंस तो एटा हला हमर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर तापरे रेंडरिंग एडवाइस टू द president and governors on the question of disqualification incurred by the members of the union or state legislature माने प्रेसिडेंट और गवर्नर क्वेश्चन करि परिबे डिस्क्वालिफिकेशन इनक्योर्ड मेंबर ऑफ द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर ऊपर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर फॉर इंक्वायरिंग इनटू द डिस्प्यूट्स रेजिंग आउट ऑफ कनेक्टेड विथ द इलेक्शन अरेंजमेंट करंती से माने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अलॉटमेंट of election symbols to the party of the time of elections preparation of order central broadcast and telecast in a location day and time different political party expressions of person from disqualification imposed by judicial decisions notification of
डेट्स एंड शेड्यूल ये सब माने देख यहाँ केमती नॉमिनेशन पेपर सब इलेक्शन कमिशन माने ये सब कार्य प्रोसेसिंग नेसेसरी स्टाफ ऑफ द कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट तापर डिटरमाइन कोड कंडक्ट ऑब्जर्व्स बाय द पार्टी एंड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन टू एंश्योर दैट द वोटर्स list are kept up to date at all times and to see that there are no errors therein to accords recognition to political party as all India or state level party to decide tapare achi to disputes regarding election symbols and event participants kaako kon symbol चाहिए the election commissions can disqualify a candidate if he fails to submit election returns within प्रेस्क्राइब पीरियड्स गोटे पीरियड्स को भी समय माने गोटे निर्धारण करे तापर सुप्रीम कोर्ट रो रूलिंग एंड रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन विषय रे बुझिबा देखो भिडियोटा लंबा हो पारे बट टिके जदि भल से जदि बुझिबार कि भिडियोटा लंबा हेबो ही हेबो तापर देखो एप्रिल आमर चेयर 1994 सुप्रीम कोर्ट माने प्रतिबंधक लगे इलेक्शन कमिशन उपर जोटा कि फ्रॉम टेकिंग सो मोटो एक्शन बोलिकी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट उपर इन केस वेयर इट प्रेसाइड्स दैट देयर वाज ए वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट द कोर्ट सेट कहितला ये एवरी सच केस इलेक्शन कमिशन विल हैव टू अप्रोच द एपेक्स कोर्ट डायरेक्ट फॉर दैट माने कैंसी भी केस हला से कोर्ट रो डायरेक्शन नेबो द ऑर्डर was passed by a division's bench comprising Mr. Justice J.S. Verma and Mr. Justice S.P. Bharucha. After the Election Commission Council admitted before the court that the model code of conduct did not have any legal sanctions. après देखो गुटे माने राइट पिटिशन हेतला फाइल्ड अंडर गवर्नमेंट अंडर चैलेंजिंग द चीफ इलेक्शन कमिशन को माने से करथिला जे पावर टू एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इवेंट बिफोर द नोटिफिकेशन कॉलिंग फॉर इलेक्शन वाज इश्यू कहै छी ये गुटे रिट पिटिशन हेतला जोटा कि फाइल्ड बाय हमर आंध्र गवर्नमेंट चैलेंज करथिला हम चीफ इलेक्शन कमिशन को मॉडल कंडक्ट ऑफ माने जो पावर टू एनफोर्स बिफोर द नोटिफिकेशन कॉलिंग माने इलेक्शन वाज इशू द जज क्लैरिफाई दैट दे वर नॉट सेइंग दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैड नो फोर्स दे आल्सो से कहितला ये प्रेजेंट केस आल्सो दे वर नॉट सेइंग दैट द इलेक्शन कमिशन वाज नॉट राइट माने से आल्सो कहितला ये प्रेजेंट केस माने माने सेटा माने इलेक्शन कमिशन माने नॉट राइट सेटा राइट नुहे द जज हाउएवर एट दैट इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइडेड वेदर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोग्राम माने इटा इम्प्लीमेंट करथिला गोटे पार्टिकुलर प्रोग्राम माने कहार अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट इफ द गवर्नमेंट थॉट it fit to do so but later the court found the action illegal it would have to face the consequence देखो तापर अछि नेक्स्ट द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट देयर वाज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव एब्सोल्यूट पावर माने कोर्ट क्लियर कहि छी जे नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एब्सोल्यूट पावर टू वन पर्सन माने पूरा एब्सोल्यूट पावर दे गोटे पर्सन सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट फ्रेम बाय इलेक्शन कमिशन मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट बाय इलेक्शन कमिशन व्हेन बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी पावर इट्स लीगल एफिशिएंसी हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी पावर जाइछि जदि लीगल एफिशिएंसी हैज बी डिसाइडेड बाय माने कोर्ट माने कैसे भी लीगल एफिकेसी हैला हैज टू डिसाइड कर पार कोर्ट ऑन 26 अप्रैल आमर 1994 कोर्ट रूल दैट इलेक्शन कमिशन रूल करथिला दैट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस अगेंस्ट स्टेट वायलेटिंग इटा इंडिपेंडेंटली माने
डिसीजन नहीं अगेंस्ट द स्टेट भायोलेट करथिला द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इटा माने गुटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनी पारिबो द कमिशन इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन prima facie the court thus ruled that the effective date implementation of the code starts the dates of issuance of notification and not from whichever date the commission declared the futures elections program in July 1995 रे कोर्ट जजमेंट देथिला ensure the multi member status माने मल्टी मेंबर रो स्टेटस गुटे दिला सुप्रीम कोर्ट तार जजमेंट माने चीफ इलेक्शन कमिशन होची गुटे मल्टी मेंबर्स स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमिशन इट्स हेड माने इलेक्शन कमिशन रो माने हेड इलेक्शन कमिशन रो हमर हेड होचंदी चीफ इलेक्शन कमिशन एटा देखो तबरे नेक्स्ट आसीगला इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया माने इलेक्शन कमिशन को पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंस दिया जाइए से इलेक्शन कंडक्ट करि परिबो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड सेवरल स्टेप्स ऑफ इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन फ्रॉम द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द ब्यूरोक्रेसी माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुटे माने कोथिरे अंतर्भुक्त अछि माने इटा अनेक स्टेप रे माने एनजीओ अछि इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन फ्रॉम द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्लियामेंट एटा पॉसिबल इन्फ्लुएंस ओटे हमर पार्लियामेंट पई प्रेसिडेंट पई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पई एवं ब्यूरोक्रेसी पई इट हैज बीन लेट डाउन दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव चीफ इलेक्शन कमिशन को केमिति रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस केमिति तार महाभियोग हेबो तार व्यवस्थाटी कोन फॉर द प्रपोज पार्लियामेंट हैज टू पास ए रेजोल्यूशन सपोर्ट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज हाउस इंडिविजुअली एंड दिस रेजोल्यूशन इज टू बी प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट एलोन कैन माने राष्ट्रपति मात्र जड़े व्यक्ति जी की इम्पीचमेंट करि परिबो हमर इलेक्शन कमिशन रो रिमूवल प्रोसेसटा स्टार्ट करि परिबो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन फर्दर कंडीशन कैनसी भी कंडीशन रे सर्विस कोनसी भी कंडीशन रे ऑफ द इलेक्शन कमिशन कैन नॉट बी चेंज एंड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट माने चेंज करि पारेबनी अपॉइंटमेंट क्षेत्र द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन हैज टू द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर टीन सेशन ऑब्जर्व करिसम टाइम टू जून से टाइम थिला जनरल इलेक्शन रो से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ऑफ पावर सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग द इलेक्शन कमिशन व्हिच हेड किए हमर चीफ इलेक्शन कमिशन एटा पढ़िला आमे एटा ऑलरेडी पढ़ी सारिछु इथिरे माने गुंदले गोपी देछि तापरे देखो 1997 रे कंडक्ट चीफ इलेक्शन कमिशंस became the controversy of the issue of countermanding of election in several constituency and over issue postponement changing of dates माने जदि धरो आज जनरल माने बाय इलेक्शन अछि से बाय इलेक्शन रे जदि आमे वोट दे जीवानी कोनसी भी जदि केही भी गलेनी जदि वोट दे आम धरो ए झारसुगुड़ा रे जदि बाय इलेक्शन हला जदि केही भी वोट दे गलेनी ताहले से इलेक्शनटा माने स्टॉप हो जीवो आ गुटे नुआ डेट फिक्स करिवो पोस्टपोन माने चेंजिंग ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन द डिसीजन टीएन सेशंस द चीफ इलेक्शन कमिशनर्स at the time of May June 99 election to countermand election in several अनेक निर्वाचन मंडली माने जेमिति पर्टिकुलर बिहार gave rise to big controversy and regarding the powers of the chief election commissioners further his decision to postpone the polls तांको डिसीजन रे पोस्टपोन भी ले परिबो डेट ता चेंज भी कर दि परिबे polls after the assassinations Mr. Rajiv Gandhi 21 में 99 election about 3 week
his decision to postpone ମାନେ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଡିସିଜନ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଥିଲା few hours ମାନେ ଯେଉଁ few hours ପାଇଁ before starts of polling made his conduct controversial while Mr. Sessions defend his actions on the ground of ensuring a free and fair poll ଏଇଟା ଥିଲା his critics ମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି guilty of ground ensuring free and fair poll his critic ଏଇଟା ହେଇଥିଲା and wrongful exercise of his power ଟା आफ्टर कन्स्टिट्यूशन 10th लोकसभा आमर 10 नंबर लोकसभा जून 1991 जो होता सब मेम्बर कहते कि इनिशिएशंस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर सेशंस को अगेंस्ट हाउएवर दे डिसाइड नॉट परस्यू द मैटर ड्यूरिंग द पीरियड 1991 और 1996 रे जो पीरियडटा थिला मिस्टर आमर जो टीएन सेशन को as the chief election commission से थे several by election to the Lok Sabha state legislative assembly seat and for the माने pledge election to several state legislative assembly held to the chief election commission सेटा माने held हितला तापरे remain busy in making arrangement for the election these election due to such efforts the Indian election became more orderly less expensive less violent also the election code come to be respected code however along with postponement ମାନେ ଗୋଟେ polling and strictness bordering upon the rigidness ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସେଟା ରେଗୁଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ to work in election commission single member of commission Mr. Tensons and the chief election project himself as a fair and firm and so the people general appreciated efforts nevertheless office chief election came to be developed into a center of debates fact controversy at times देखो इटा एते पढ़िबार नहीं रहो आमे करेंटली जोटा होची सेटा पढ़िबा देखो हमर नरेंद्र मोदी को विषय जो लोकसभा इलेक्शन होता 2019 माने सम पॉलिटिकल पार्टी लाइक द कांग्रेस जमीती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी थी जोटा कि कांग्रेस एसपी बीएसपी टीडीपी एनसीएस डीएम सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया एंड फ्यू अदर्स राइज द इश्यू इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव न्यूट्रलिटी एटा गोटे ऑब्जेक्टिव neutrality of the election commission of India projecting the view that it was acting in a partisan matter by not taking promote necessary actions इटा माने जरूरी actions बोले कि नहीं नथिले against violation हितला code of conduct political party in particular not against the ruling माने तार against resigning BAP of PM Modi they also raised doubts about the accuracy of EVM and the possibility of tampering with these machines they demanded paper ballot system से demand करते ये paper ballot system place of EVM voting and EVM's record must be tell with the VVPAT machines recording however elections commissions India did not find merit in such complaints and held that the EVMs were perfectly accurate and cannot be tampered with or change मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सम पावर्स देछि हमर चीफ इलेक्शन कमिशन को कि जो माने से माने एक्सेस गुड डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे परिबे इट्स बिकम से रेस्पोंसिबिलिटी तांकर गुटे रेस्पोंसिबिलिटी से above the controversies to preserve the dignity of high office and ensures cooperations and coordinations in the working of the 3-member election commissions of India. Fortunately, now the office of the Chief Election Commission has started behaving in a very dignified and efficient way. As a whole, the Election Commission has been doing a commendable work and due to efforts, the election in the country have become more free and fair, less expensive and violent efficient by every account. The election held India already free. मु मेन पॉइंट पढ़ी दूची इटा बहुत बेसी दी इम्पार्शियल वोटिंग 100% सिक्रेट एंड परफेक्टली माने नोटिफाई हेबार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग द प्रोसीड्योर माने प्रोसेस थ्रू रे हेबार कथा से हमर जो इलेक्शन टा हेबो देयर इज जीरो टॉलरेंस रे माने इनरेगुलरिटी
real troubles has been deteriorating quality party ମାନେ ରହିବାର କଥା among the political party their leaders ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବାର କଥା ସେ ଯେଉଁ ଲିଡର ମାନେ ଥିବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆଉ ମାନେ नो डेमोक्रेसी सिस्टम कैनली बिकन ऑपरेटिव ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଲି ଏଲାର୍ଟ ଥିବାର କଥା ତାର ଏସେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆଉ therefore laid down the provisions of organized independent healthy and efficient election system machinery for the conduct of election ମାନେ ପୁରା healthy machinery for conduct କରିପାରୁଥିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେ ensure the independence of election ପୁରା fully independence of the election commission by incorporating several essential features autonomous status of freedom ମାନେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି autonomous status of freedom actions ନେଇପାରିବ appointment of election commissions by the president of India difficult method removal these commissioners ସେ କମିଶନ ମାନଙ୍କୁ difficult method ମାନେ remove କରିପାରିବେ in fact all other future essential for making the election commissions an independent and strong constitutional institution the functioning of the election commission for the last 6 ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି କି ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେକର୍ସ ମାନେ ଏବେ ସପ୍ତମ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୀ ଗଲାଣି ଆମର ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପୁରା ଚାଲୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାର 75ତମ ସରିଗଲାଣି ଏଇଟା 76ତମ ଇୟର୍ସ ଚାଲୁଛି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା इंडियन इलेक्शन सिस्टम आम इलेक्शन सिस्टमटा 1951 और 1952 जनरल इलेक्शनटा स्टार्ट हो सारा पूरा 75 इयर्स पाखापाखि गला तो मुझे चैप्टर सारे पूरा गोटे सर्ट भिडियोटे बनैबी एमती 5-10 मिनट भितर पूरा खाली डिस्कसन करी मेन पॉइंट तो इतना वीडियो थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु और शेयर कर दिंतु थैंक यू।